Welcome to this free video course on ajayshesh.in और मैं डॉक्टर अजय शेष आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद है आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा है एंड we are going to have this beautiful training program which is free of cost for you for the youth of this country and this course, as you can see on the screen, is guiding principles of life एंड फॉर गेटिंग द राइट माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट सही है, अगर आपका सोचने का ढंग सही है, सोचने का साँचा अगर आपका सही है, तो यू विल बी एबल टू टेक गुड डिसीजंस इन लाइफ। यू विल बी एबल टू टेक proper steps for your career, for your studies, for your everything. So उम्मीद करता हूँ कि ये कोर्स आपको पसंद आएगा। इट्स नॉट अ वेरी लॉन्ग कोर्स, इट्स ओनली अराउंड 60 to 75 minutes का ये कोर्स रहेगा। एंड इफ यू आर वंडरिंग व्हाट इज दिस MindX, right? Well, MindX is the series of training programs which we do for the youth. And you can see mind तो आपको पता है, IND stands for India, right? And this X stands for all the positive words which begin with X or EX, like explore, expand, right? And the arrow which is going outside, which shows that that we should cross our boundaries and get into unknown territories, to take risk and think out of the box. तो ये पूरे लोगों का इस प्रकार से ये मीनिंग होता है। थिंक ऑफ ऑल द वर्ड्स which begin with EX and you will know why this X word is being used there, right? And before we begin this training program, let me take you to a particular document, which is a very important document that you can see on the screen, which is my vision framework. now अब आपको यहाँ पर लग सकता है कि ये मेरा विजन फ्रेमवर्क मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ। Well, gradually you will come to know as to why I am showing you this vision framework, right? If I talk about my core purpose, कि मेरा जीवन का उद्देश्य क्या है, मैं क्यों ये सब कर रहा हूँ, और दिस ट्रेनिंग बिजनेस क्यों, like my career, my work, my life, what does it stand for? Quite simply stated, जीवन का उद्देश्य क्या है? So if you can see here, the purpose of my life is to contribute positively to the world's emotional well-being and to motivate humanity to achieve more. मेरे जीवन का उद्देश्य है विश्व के भावनात्मक स्वास्थ्य को बेहतर करना और इंसानियत को और अधिक उपलब्धियों के लिए प्रेरित करना। तो ये मेरे जीवन का उद्देश्य है, और मैं जो कुछ भी करता हूँ, अगर मैं कुछ लिखता भी हूँ तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, अगर मैं कुछ रिकॉर्डिंग करता हूँ जैसे कि अभी कर रहा हूँ, तो ये उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए है। जब मैं स्टेज पे होता हूँ तब इसी उद्देश्य की पूर्ति होती है, एंड दैट इज माय पर्टिकुलर पर्पस ऑफ लाइफ। why this is important, why a core purpose of life is important, it is because जब भी मैं इस ट्रैक से भटकता हूँ, या जब भी इस ट्रैक से मैं हटता हूँ और जब मैं वापस इस कोर पर्पस को पढ़ता हूँ, तो मेरी गाड़ी वापस पटरी पर आ जाती है। आई रियलाइज दैट व्हाट माई लाइफ स्टैंड्स फॉर, एंड सो व्हाट कोर्स करेक्शन इज नीडेड। क्विकली वी गेट ऑन टू व्हाट आर माई कोर वैल्यूज। कोर वैल्यूज मीन्स वो कौन से नियमों का पालन मैं करता हूं जिसके कारण ये कोर पर्पस जो है फुलफिल होता है, मेरे जीवन का उद्देश्य फुलफिल होता है। इन शॉर्ट, वेरी क्विकली लेट मी टेल यू अबाउट माय कोर वैल्यूज। द फर्स्ट वन इज, एज यू कैन सी, एक्सीलेंस इन कम्युनिकेशन। मेरा जो भी कम्युनिकेशन होगा वो एक्सीलेंट होगा, वो लोगों को समझ में आएगा, वो लोगों के काम का होगा। I have spent a great deal on being a good communicator and become a good speaker and a good writer. बहुत अपने आप को मैंने अलग अलग कोर्सेज करके अपग्रेड किया है कि I can be an excellent communicator, which is a very important life skill. Second of my core values is continuous improvement across all four dimensions. 4 डायमेंशंस होते हैं लाइफ के, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। मैं कॉन्स्टेंटली फिजिकली अपग्रेड होता रहूं ताकि हेल्दी बना रहूं, सो दैट आई कैन डू ग्रेट थिंग्स इन लाइफ। मेंटली नई नई चीज़ें सीखता रहूं, नई किताबें पढ़ते रहूं, और ये पूरी दुनिया में क्या हो रहा है इसका नॉलेज, इसका इंटेलिजेंस, इसका ब्रिलियंस मेरे माइंड में रहे, वो इम्प्रूवमेंट होता रहे। थर्ड इज इमोशनल, बीइंग एबल टू फेस एनी सिचुएशन इन लाइफ, किसी भी प्रकार की सिचुएशन को फेस करके उसमें से रास्ता निकाल सकूं। एंड स्पिरिचुअल,
कि मेरे इस जीवन को किस प्रकार से याद किया जाएगा जब मैं इस धरती से चला जाऊंगा। तो इन चारों डायमेंशंस में कांस्टेंट इंप्रूवमेंट होता रहे। नेक्स्ट इज, एज यू कैन सी, एनर्जेटिक ऑनरिंग ऑफ कमिटमेंट्स। जब भी मैं कोई कमिटमेंट करूं, जब भी मैं कोई इरादा करूं, अपने आप से कमिटमेंट यानी मेरा इरादा, और दूसरों से कमिटमेंट यानी मैं प्रोमिसेस, जब भी मैं अपने आप से या किसी और से कोई कमिटमेंट करूं, कोई वादा करूं, तो उसको एनर्जेटिकली उसको फुलफिल करूं। हाफ हार्टेडली कुछ करूंगा तो इट इज नॉट एग्जैक्टली फुलफिलिंग द कमिटमेंट। एनर्जेटिकली उसको मैं उस कमिटमेंट को पूरा करूं, ये मेरा एक कोर वैल्यू है। सीजलेस एक्सप्लोरेशन ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब ये नहीं ट्रैवल करना, सीजलेस यानी दुनिया में क्या चल रहा है, अलग अलग किताबों के माध्यम से, वेबसाइट्स के माध्यम से, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के माध्यम से जो है दुनिया में क्या चल रहा है उसकी जानकारी लेते रहना। टू कीप एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, नॉट नेसेसरीली थ्रू ट्रैवलिंग। रेडिएट होप एंड ग्रोथ एट ऑल टाइम्स। कभी भी मैं बात करूंगा तो ग्रोथ की ही बात करूंगा, कभी भी मैं बात करूंगा तो होप की ही बात करूंगा, उम्मीद की ही बात करूंगा, और जब भी मैं कोई बात करूंगा या लिखूंगा तो सक्सेस की ही बात करूंगा, और सक्सेस किस तरीके से सक्सेस अचीव करना, ये ही बातें मैं आपके साथ में करूंगा। माई ब्रांड प्रॉमिस, ये सब जब मैं करता हूं तो मेरी एक ब्रांड प्रॉमिस बनती है। पीपल नो मी फॉर दिस, पीपल विल नो मी फॉर दिस, एंड माई ब्रांड प्रॉमिस इज, एज यू कैन सी, अपलिफ्टमेंट assured। अगर आप 5 मिनट भी मेरे साथ बिताते हैं तो 2 सीढ़ी चढ़ के ही जाएंगे। अगर आप मेरे साथ 10 मिनट भी बताते हैं तो कोई ना कोई लाइफ की क्लैरिटी आप लेकर के जाएंगे, कोई ना कोई नया नया प्लान, नई उम्मीद और नई एनर्जी के साथ जो है आप मुझसे विदा लेंगे। दैट इज माई ब्रांड प्रॉमिस, दैट योर अपलिफ्टमेंट इज अश्योर्ड नो मैटर हाउ मच ऑफ टाइम यू स्पेंड विथ मी। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूं? अगेन बिकॉज ये दिस इज माय विजन फ्रेमवर्क, और जो मेरी लाइफ को एक ट्रैक पर रखता है। द पर्पज ऑफ टेलिंग यू दिस इज नॉट टू ट्राई टू इम्प्रेस यू और एनीथिंग, बट द इंपॉर्टेंस ऑफ इट कि आपके लाइफ का विजन फ्रेमवर्क क्या है, राइट? आप इसी को अपने तरीके से मॉडिफाई करके अपना लाइफ का विजन फ्रेमवर्क बना सकते हैं, और बट डू हैव अ विजन फ्रेमवर्क, right? Because this will always keep you in track, this will always keep your priorities in check, and this is always will keep telling you if for any reason अगर आप off track हो जाते हैं तो। So quickly after this information, let us come back to guiding principles of life, and this is something about myself. My name is Dr. Ajay Shesh, if you're still wondering भाई कौन है ये व्यक्ति, एंड थोड़े बहुत डिटेल्स स्क्रीन में लिखे हुए हैं, मैं उसके बखान में नहीं जाऊंगा, बट आई विल ओनली टेल दैट I've had a very remarkable life. I've learnt a lot, I've taught a lot, I have had great experiences, great struggles I've faced, a lot of failures, a lot of mistakes, a lot of losses. It's been a very checkered, black and white, a lot of successes and a lot of failures, everything. You can visit www.ajayshesh.in to know more about me, and well, that's only a little bit I'm going to talk about myself, and then let's quickly get on to the today's training program. Well, today we are going to talk about certain principles. Now, I am not going to read out all of them. They are just on your screen, just for the sake of beginning, that we are going to talk about 14 principles of life. ये 14 प्रिंसिपल्स अगर आप फॉलो करते हैं, नो मैटर व्हाट स्टेज ऑफ लाइफ यू आर इन, व्हाट स्टेज ऑफ सक्सेस यू आर इन, आपकी उम्र क्या है, इस बात से फर्क नहीं पड़ता। अगर आप इन 14 प्रिंसिपल्स को प्रॉपरली अपने लाइफ में फॉलो करते हैं तो I am sure that you will reach great heights, and if you've already reached heights, then you are going to achieve something really big in life. और ये 14 प्रिंसिपल्स आपको सही डिसीजंस लेने में मदद करेंगे, सही चॉइसेस लेने में मदद करेंगे, और एक ऐसा माइंडसेट बनाएंगे कि जिससे आप अपने लक्ष्यों के प्रति हमेशा चैतन्य आपको रहेगा, और लक्ष्यों के प्रति आपका जो रास्ता है वो, मैं तो नहीं ये नहीं कहता कि रास्ता पूरा आपका बन जाएगा, रास्ता आपका आसान हो जाएगा, बट ये उस रास्ते में क्या करना एग्जैक्टली ये आपको पता चल जाएगा। क्विकली लेट अस स्टार्ट. This is the first principle that I am going to talk about, right? Your belief at the start of the journey defines the journey.
किसी भी सफर की शुरुआत में जिस मनोभाव के साथ में आप उस सफर की शुरुआत करते हैं, जिन इमोशंस के साथ, जिन बिलीफ्स के साथ आप उस सफर की शुरुआत करते हैं, आपका सफर उन्हीं बिलीफ से परिभाषित होता है। राइट, आई होप माई लैंग्वेज इज ओके। इंग्लिश हिंदी मिक्स करके जो अपनी बोलचाल की भाषा रहती है, उस भाषा में मैं ये बोल रहा हूं यहां पर। सो ऑलवेज स्टार्ट विद अ पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप ये ट्रेनिंग प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया है। आप अलग अलग तरीके से जो है इस ट्रेनिंग प्रोग्राम की शुरुआत जो कर सकते हैं। चलो, ये डॉक्टर अजय शेष कोई है, चलो लेट अस सी क्या बताते हैं, लेट अस सी, कुछ काम की बात होगी तो अपन फॉलो कर लेंगे, नहीं होगी तो ऐसे तो बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होते हैं, लेट मी सी। अगर ये इज डाउटफुल, ये लेट मी सी वाले एटीट्यूड के साथ में अगर आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को देख रहे हैं, तो लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, ये लेट मी सी जो है वो लेट मी सी ही रहेगा। राइट, बट इफ यू हैव अ फर्म बिलीव दैट यस, दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज गोइंग टू बी यूजफुल फॉर मी, दैट यस, द काइंड ऑफ पर्सन हु इज टेकिंग दिस ट्रेनिंग इज अ क्रेडिबल पर्सन, तो मुझे कुछ ना कुछ सीखने के लिए इसमें है। ठीक है, कुछ चीजें मुझे पता होंगी, बट उसके बाद भी जो टूल्स यहाँ पर दिए जा रहे हैं, जो चीजें समझाई जा रही हैं, उस फर्म बिलीफ के साथ में अगर इस कोर्स को मैं शुरुआत करता हूं कि आई एम गोइंग टू गेन अ लॉट आउट ऑफ दिस कोर्स, आई एम गोइंग टू लर्न अ लॉट आउट ऑफ दिस, एंड माई लाइफ इज रियली गोइंग टू चेंज इन द पॉजिटिव डायरेक्शन। इस बिलीफ के साथ में अगर आप ये कोर्स स्टार्ट करते हैं, इस बिलीफ के साथ में आप कोई भी चीज लाइफ की स्टार्ट करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं, कोई भी नया बिजनेस प्रोजेक्ट आप लेते हैं, आप जॉब में हैं, कोई भी नया प्रोजेक्ट आप लेते हैं, कोई बिजनेस वेंचर में जाते हैं, कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अगर ये बिलीफ आपके मन में नहीं रहेगा, राइट, या सही बिलीफ लेकर के आप चलेंगे, तो आपका काम भी सही होगा। मुश्किलें तो आएंगी, मुश्किलों से आप बच नहीं सकते, बट इट इज ऑल अबाउट द माइंडसेट, इट इज ऑल अबाउट द हार्ट सेट। सिर्फ माइंडसेट की बात नहीं होती, हार्ट सेट की भी बात होती है। सो दिस इज फर्स्ट थिंग विच आई वॉन्ट टू टेल यू। इफ एवर, एक बहुत अच्छा कोट मैंने कहीं पर पढ़ा था, सुना था, इफ यू एवर वॉन्ट टू क्विट, कभी भी अगर कोई चीज छोड़ देने का दिल करता है, तो हमेशा याद करो व्हाई यू हैड स्टार्टेड। इफ यू वांट टू क्विट एनीथिंग, जस्ट रिमेंबर द रीजंस व्हाई यू हैड स्टार्टेड इट। सो इसीलिए ये स्टार्ट किसी भी चीज का बहुत महत्वपूर्ण होता है। सो वी आर टॉकिंग अबाउट बिलीफ हियर, राइट। सो लेट अस मूव अवर, ये जो हमारा जो ट्रैकिंग सिस्टम जो है, इसको मैक्सिमम पे लेकर के आते हैं। एंड आई एम आस्किंग टू क्वेश्चंस हियर, व्हाट डू यू वांट टू गेन आउट ऑफ दिस कोर्स, राइट। ये आप आपके जो वर्कबुक आपको मैं दे रहा हूं, वर्कबुक यू विल सी अलोंग विद दिस कोर्स, वो वर्कबुक डाउनलोड कर लीजिए। एज फार एज पॉसिबल उसको पेपरलेस रखिए, जस्ट डाउनलोड इट एंड टाइप इट देयर ओनली, व्हाट डू यू वांट टू गेन आउट ऑफ दिस कोर्स, राइट, एंड हाउ विल यू एलिवेट योर लाइफ इनटू अ मास्टरपीस। अगर आपकी लाइफ को एक मास्टरपीस बनाना है, जो कि ये कोर्स पूरी कोशिश करेगा कि ऐसा माइंडसेट आपको दें कि आपका लाइफ का एक मास्टरपीस बने, so how will you elevate your life into a masterpiece, right? These are the two questions I want you to answer. Maybe not now, but ये जब पूरे 14 प्रिंसिपल्स हम कवर कर लेंगे, तब आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। So let us begin with a great belief, right, which is principle number 1, and put our belief to the maximum. इस होप के साथ, इस उम्मीद के साथ कि इस कोर्स से मैं बहुत कुछ गेन करने वाला हूं और मेरा माइंड वाकई खुलने वाला है, we started off with this principle number 1. Now let us go into the second principle. Very, very important. I am in absolutely in love with this principle. There are no rewards or punishments in life. There are only consequences. जिंदगी में कोई भी परिणाम, कोई भी सजा या इनाम नहीं होता है। जिंदगी में कोई भी सजा या इनाम नहीं होता है, जिंदगी में सिर्फ परिणाम होते हैं। हम सजा उसको तब बोलते हैं जब परिणाम हमारे अनुकूल नहीं होते, तो हम उसको सजा का नाम दे देते हैं, और परिणाम जब हमारे अनुकूल होते हैं तब हम उसको इनाम का नाम दे देते हैं, रिवॉर्ड का नाम दे देते हैं। देयर आर नो रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट्स इन लाइफ, देयर आर ओनली कॉन्सिक्वेंसेस, राइट। Consequences of what? Consequences of choice, consequences of decision, and this is an omnipotent law. You cannot escape this, right? ये cause and effect से पूरी दुनिया जो है ये बनी हुई है, right? If you smoke,
Be ready for the consequences. If you drink, if you have anything which destroys your health, be ready for the consequences. फिर जब आपको ब्रोंकाइटिस हो जाएगा या भगवान न करे आपको लंग कैंसर हो जाए, इट इज नॉट अ पनिशमेंट, it is not a punishment, it is the consequence of smoking, right? I have these 3 Guinness World Records and a Golden Book of World Record by my name, right? Is it a reward? No, it is a consequence of diligently working towards a particular ability of speaking. And when I do that, as a consequence, I get the Guinness World Record. ये जो national award मुझे मिला, is it a reward? No, it is a consequence of doing something for the youth, right? So रिवॉर्ड और पनिशमेंट के चक्कर में मत पड़िए. आप ये देखिए कि आप लाइफ में क्या कर रहे हैं जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बाद में आपको झेलने पड़ेंगे. यू कैनॉट एस्केप दिस ओमनी पोटेंट लॉ. ना आई एम रियली, ये मैं चाहता हूं, ये जो चित्र आपको दिख रहा है ना, इस चित्र का स्क्रीनशॉट लेकर के इसको सेव कर लीजिए. बिकॉज एवरीथिंग इन लाइफ इज अ सीरीज ऑफ एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन एक्शन रिएक्शन, राइट? सो नाउ दीज आर द क्वेश्चन. ये डोमिनो इफेक्ट होता है. जब एक सामने वाले डोमिनो को जब मैं धक्का दूंगा तो उसके ऊपर गिर करके a series of consequences will happen. Some of our decisions are such that it leads to a series of consequences, right? What great consequences do you want in life? आपके लाइफ में कौन से अच्छे से भी ऊपर महान कॉन्सिक्वेंसेस आप चाहते हैं? क्या जिंदगी के परिणाम आपको चाहिए? जिंदगी में कौन से परिणाम आप लाना चाहेंगे जिसके लिए आपका जीवन जाना जाएगा? ये 2-3 आप लिख लीजिए. बहुत ज्यादा नहीं, 3 से ज्यादा नहीं, 3 सिर्फ लिखना है. 3 कौन से परिणाम आप अपने करियर से, अपनी जिंदगी से चाहते हैं, ठीक है? और दूसरा, व्हाट नीड्स टू बी स्टार्टेड फ्रॉम टुडे टू अचीव इट. आज से मुझे क्या करना होगा उन परिणामों को पाने के लिए? आज से अपने जीवन में मुझे क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, ठीक है, जिससे ये परिणाम जो मैं चाहता हूं ये मुझे मिले. सो दिस इज द सेकेंड लॉ, right? So don't get bothered about the questions which are fine. क्या इसका मैं क्या आंसर लिखूंगा? Now just go through this whole training program. इस 1-1.25 घंटे की ट्रेनिंग प्रोग्राम को आप पूरा कीजिए और उसके बाद में आपको इन क्वेश्चंस का आंसर लिखने में मदद मिलेगी. नाउ रिमेंबर, यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस सो दैट अ ब्लूप्रिंट ऑफ योर लाइफ इज क्रिएटेड इन फ्रंट ऑफ यू. So are we ready for the next principle? The next principle says, every break of promise is a scratch on the beautiful painting of life. Every break of promise. Now, this is not my quote. This is, I think, I will confirm it later, but I think it was said by T.T. Krishnamachari, right? Who's also known as Mahatria Ra. Mahatria Ra, उनका नाम है. A fabulous person, a fabulous ट्रेनर. और उनका कहना है, एवरी ब्रेक ऑफ प्रॉमिस इज अ स्क्रैच ऑन द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ लाइफ. जब भी मैं किसी को कुछ प्रॉमिस करता हूं और उसको फुलफिल नहीं करता, अपनी प्रॉमिस को ब्रेक करता हूं, या फिर जब भी मैं कोई काम करता हूं उस एंथुजियाज्म के साथ नहीं करता हूं जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, आई पुट अ स्क्रैच ऑन द ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ लाइफ. व्हाट डू वी वांट, राइट? व्हाट डू वी वांट? डू वी वांट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग ऑफ लाइफ, or do we want a series of scratches जिसके बीच बीच में कुछ पेंटिंग दिख रही है? आप अपने जीवन की पेंटिंग किस प्रकार से देखना चाहेंगे? एवरी ब्रेक ऑफ प्रॉमिस, एंड दैट इज व्हाई थिंक ट्वाइस बिफोर मेकिंग अ प्रॉमिस. कोई भी वादा करने के पहले 2 बार सोचिए, एंड थिंक अ मिलियन टाइम्स बिफोर ब्रेकिंग द प्रॉमिस. कोई भी वादा करने के पहले 2 बार सोचिए और कोई भी वादा तोड़ने के पहले लाखों बार सोचिए. बिकॉज खूबसूरत, हमारी कार पे नई कार पे एक स्क्रैच लग जाए कैसे लगेगा हमको? आपके नए कंप्यूटर पे, आपके नए लैपटॉप पे एक भद्दा स्क्रैच लग जाए कैसा लगेगा आपको? बट कॉन्स्टेंटली वी knowingly unknowingly we keep putting these scratches on the painting of our life. We do not want a painting like this. ऐसा पेंटिंग हम चाहेंगे क्या? नहीं, ठीक है? So here I want you to answer 2 questions later on. What consequences will you consider before making a promise? As I had said, ये बिल्कुल लॉजिकल सीक्वेंस में है, all these consequences. अगर मैं एक प्रॉमिस ब्रेक करता हूं तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? मेरे अपने जीवन में क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे? ठीक है?
और जिसको मैंने प्रॉमिस किया था उसके साथ क्या कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, अल्टीमेटली मैं अंदर से कितना वीक होऊंगा और क्या होगा। दिस इज व्हाट आई वांट यू टू कंसिडर एंड राइट डाउन योर थॉट्स। ठीक है। तो जो है प्रॉमिस, व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज विल यू कंसिडर बिफोर ब्रेकिंग अ प्रॉमिस, और उसके पहले व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज विल यू कंसिडर बिफोर मेकिंग अ प्रॉमिस, कोई वादा करने के पहले, ठीक है, मैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। अब मैंने वादा कर दिया आपसे दैट दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम इज रियली गोइंग टू बी गुड फॉर यू, ये मैं वादा करता हूं। बट इफ आई डू हाफ हार्टेडली दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, या हाफ हार्टेडली अगर मैंने ये ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट ही नहीं किया और ये आप तक पहुंचा ही नहीं, तो मैं कैसे अंदर से वीक हो जाऊंगा, क्योंकि पूरी दुनिया को नहीं पता कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम मैंने कंप्लीट ही नहीं किया, पर मुझे तो अंदर से पता है, और अंदर से ये मुझे कैसे वीक करेगा, ये कॉन्सिक्वेंसेज भी मुझे कंसिडर करना पड़ेगा। सो व्हाट कॉन्सिक्वेंसेज विल यू कंसिडर बिफोर मेकिंग अ प्रॉमिस, कोई प्रॉमिस करने के पहले आप क्या 10 चीजों का ध्यान रखेंगे, और प्रॉमिस तोड़ने के पहले आप कौन सी 10 चीजों का ध्यान रखेंगे, राइट। आई अंडरस्टैंड इट हैपन्स दैट मेनी टाइम्स हम कोई बोलते हैं और बाद में कोई ऐसी अड़चन आ जाती है कि जिसके कारण वो प्रॉमिस हम फुलफिल नहीं कर पाते, या समथिंग हैपन्स बिकॉज ऑफ विच वो प्रॉमिस फुलफिल करने में देर होती है। इट डज हैपन, इट हैपन्स विथ मी ऑल्सो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर इंटेंशन। अगर ऐसा कुछ हो रहा है कि आपने कहीं पहुंचने का वादा किया और आप नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो वेल इन टाइम मेक अ फोन कॉल एंड टेल देम that you are going to be late, or you are going to that how you will reschedule this, apologize for it, and tell the other party that how you are going to repair things, how you are going to overcompensate for the promise which you are unable to fulfill this time. सो दैट सामने वाला आप वेट ना करता रहे, सामने वाला किसी धोखे में ना रहे, सामने वाले को कोई परेशानी ना हो। A very, very, very powerful principle is this: every break of promise is a scratch on the beautiful painting of life. I hope. How many of you are already learning a lot? How many of you are already finding this course ki yes, these are a few mindsets which I need to develop, right? If you are, then just raise your hands. In the eyes of my mind, I'll be able to see your raised hand, right? Thank you. Thank you. यहाँ पर नीचे on the comment side you can write your comments, or I'll encourage you to write comments and tell me as to ये कोर्स आपको कैसा लगा, इस कोर्स से आपके लाइफ में क्या चेंज आया, और ये कोर्स और बेहतर कैसा हो सकता है। गिव मी सम पॉजिटिव फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंटली नेगेटिव फीडबैक, एवरीथिंग यू टेल मी, सो दैट more and better courses can be brought out for you. Quickly we get on to the next principle. You can be great only in one area of life. Focus, right? Let me have a sip of water. There we go. You can be great in only one area of life. मुझे पता है आप महान बनना चाहते हैं, you want to be great in your field, you want to be great, you want to lead a great life. But remember, greatness can be achieved only in one area. You cannot be a great singer also, and a great player also, and a great advocate also, and a great photographer also. No, I'm talking about greatness, right? You can be great, you can be world class, you can be legendary only in one area of your life. Tendulkar, one area. Cricket, of course. His life will be known for that one thing: his batting, his cricket. Virat Kohli, one thing, again his cricket. Lata Mangeshkar will be known for one thing: her singing, her playback singing. Absolutely. You can be great in only one area of life. दुनिया आपको सलाम करती है उस एक चीज के लिए जो आप विश्व स्तर का करते हैं, उन 25 चीजों के लिए नहीं जो आप औसत तरीके से करते हैं। ठीक है, लाइफ में हमको बहुत सारी चीजें करनी होती है, बट फोकस ऑन दैट वन बिग थिंग इन विच यू वांट टू बी वर्ल्ड क्लास. इन माय केस it is going to be communication, it is going to be youth empowerment, my communication, doing youth empowerment and nation building. It is that one thing for which my life will be known. I want to become a great speaker, a great communicator. That's all. That's my one thing.
Find out that one thing in which you want to conquer the world. I want to be one of the top 10 communicators of the world, right? So this is what I want to be, and this is how the questions for you are. The one thing I will strongly recommend this particular book for you, The One Thing, right? What is the one thing that you can devote your life to? I have devoted my life to being a great communicator and for youth empowerment and doing nation building through that. That is my one thing, right? Yes, on a routine basis I do a lot of things, but my whole life is focused towards that one thing जो आपने मेरे लाइफ के कोर पर्पस में भी देखा था, right? This is some, if you think about this, you are actually creating your core purpose of life, right? And the second most important thing is, how can you make it your career or profession so that people pay, right? Now my this Mindex programs are free of cost, but yes, I am a trainer, I am an excellent coach, and I have developed these abilities. I have devoted my life to this public speaking, and there is an area of my life where people pay for me for that, and people pay me handsomely for that, for my coaching services and for my training services. अभी यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे मैं उसके डिटेल में नहीं जाना चाहता, but again, like Sachin Tendulkar, very good in cricket. Did he get paid for it? Oh yes, handsomely, right? He devoted his life and also found out a way in which people will pay handsomely for that. Got it? Hmm? All other people like M.F. Hussain, great painter, devoted his life to painting. At the same time, found out a way. उसको सिर्फ आर्ट फॉर्म में नहीं रखा, उसको चेंज भी किया into commercial aspect. How can you make it your career or your profession so that people pay? ये सोचने की बात भी बहुत ज़रूरी है, right? And we in our business courses we teach a lot about that. But first, now I want you to think about this particular thing. Remember that money is very important. If you get paid properly for that, you can do great work. Even if you want to do charity, even if you want to do service, right? You must get paid for that. So think in this way. What is one thing to which you'll devote your life? And number two, how will you find out a way to make it a career so that people pay you? So this is the next one. And see, just don't watch this program as some entertainment or some session of knowledge. These questions are more important than the principles that I'm telling you. If you don't sit and think over these questions, let me tell you, this training program will be of very limited use to you. अगर आप सिर्फ ये वीडियो देखते हैं और इन क्वेश्चंस के ऊपर में काम नहीं करते, वो थिंकिंग आप अगर नहीं करते, तो इस कोर्स का कुछ विशेष उपयोगिता आपके लिए नहीं रह जाएगी. थिंकिंग इज समथिंग विच वी ऑल अवॉइड, और यहाँ पर मैं आपको सोचने के लिए मजबूर कर रहा हूँ. लेट अस क्विकली गेट ऑन टू द नेक्स्ट वन. Now this is also one of my favorites. Now all these 14 principles are my favorites, but there are a few which just blow my mind away. This is one of them. When there is nothing big in life, small things become big. जब आपकी लाइफ में कोई बड़ा करियर नहीं रहता ना, तो छोटी छोटी चीजों को ही आप बड़ा बना देते हो. Like we see many people talking about small, sitting and criticizing someone. Sitting and criticizing some particular event. When there is no big thing in life, small things become big. अगर मेरी जीवन में कोई बड़ी चीज नहीं होगी ना, तो ये छोटी छोटी इनकन्वीनियंसेस, छोटे छोटे लोगों के क्वर्क्स जो हैं, छोटे छोटे लोगों की जो आदतों पे, लोगों की कमेंट्स पे, लोगों की एक्टिविटीज पे, और इसी पे मेरा पूरा ध्यान रहेगा. जब मेरी लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होता, तो टीवी सीरियल्स देखना और उनके कैरेक्टर्स डिस्कस करना, यही मेरे लिए बड़ी चीज हो जाती है, राइट? नाउ दिस इज सच अ बिग प्रिंसिपल दैट आई कैन डिवोट अ फुल 1 hour ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दिस, बट आई वांट यू टू जस्ट फोकस ऑन दिस पर्टिकुलर थिंग. जब आपके जीवन में कोई बड़ा लक्ष्य होता है ना, तो छोटी छोटी चीजें नगण्य हो जाती है. एपीजे अब्दुल कलाम, right? Or what a huge vision he had for India 2020, and all those things. अगर किसी प्रोग्राम में वो जाते हैं और वहां पर कुर्सी अगर अच्छी नहीं है, कुर्सी अगर उनको पसंद नहीं आई, will he mind it or become angry on that? No.
But a person, a leader who has no big vision, he'll make a big deal. वो ईगो सामने आ जाएगा, and that leader will make a big deal about the chair not being right, about the food not being right. जो विजनरी होता है जो विजनरी होता है वो छोटी छोटी चीजों को बड़ा नहीं बनाता, छोटी चीजों को छोटा ही रहा। आपके लिए वो बड़ी चीज क्या है? फॉर मी इट इज टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द वर्ल्ड्स इमोशनल वेलबींग. I don't get into criticizing people and doing all those things. Remember, small people talk about other people. छोटे लोग दूसरे लोगों के बारे में बात करते हैं. औसत लोग, एवरेज पीपल, टॉक अबाउट इवेंट्स. औसत लोग घटनाओं के बारे में बात करते हैं. एंड द टॉप क्लास पीपल टॉक अबाउट आइडियाज. महान लोग आइडियाज के बारे में बात करते हैं, वो लोगों के बारे में और घटनाओं के बारे में बात नहीं करते. व्हाट इज द बिग थिंग यू आर डिवोटिंग योर लाइफ टू? अगेन, व्हाट इज द बिग थिंग? नाउ योर लाइफ कैन बी, नाउ दिस इज अ वेरी मीनिंगफुल इमेज. बहुत सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें, इनमें से कौन सी 4 चीजें लेकर के आप अपने लाइफ का मॉन्यूमेंट बनाएंगे? नाउ दिस इमेज इज, आई लव दिस पर्टिकुलर इमेज. ये जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें, राइट? बट वो छोटे छोटे इनको इग्नोर करके कौन सी 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें लेकर के आप अपने लाइफ का मॉन्यूमेंट बनाएंगे? विच 3 or 4 worthy things will you focus on from today? Like I focus on those people who are doing great things. I don't focus on people who are not doing anything. I focus on a great training program. अगर कहीं पर अटेंड हो रहा है, how I can be a better speaker, I go and attend it, no matter how costly it is. If there is a great book written, मैं बेचैन हो जाता हूं जब तक वो किताब में ले नहीं लेता और उसको पढ़ नहीं लेता. Correct? If there is a great training program or a great website which teaches me how to write well, how to communicate better, how to make this country great, those are a few worthy things on which I focus. और जब ये मेरा फोकस इतनी बड़ी चीजों पे रहता है तो छोटी छोटी चीजें नगण्य हो जाती हैं, राइट? सो आई वांट यू टू थिंक ऑन विच 3 to 4 worthy things will you focus on from today to fulfill that big thing which you want to do in life, and which small things which are worrying you today, जो आपको आज इरिटेट कर रही हैं, जो आज आपको परेशान कर रही हैं, वो कौन सी कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको लेकर के आप परेशान होते थे पर अब से आप उनको इग्नोर करेंगे. Right? If you've thought about something big, it will be easier to answer this question. Right? ये ऐसी छोटी छोटी चीजें जिनको आप इग्नोर करेंगे और वो 4 चीजों को लेकर के अपनी लाइफ का एक मॉन्यूमेंट बनाएंगे, अपने जिंदगी का ताजमहल आप उससे बनाएंगे. राइट? सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगेन टेलिंग यू, इफ यू आर नॉट if when there is nothing big in life, small things become big. Right? Have you not seen people fighting over small things? Have you not seen people worried about small things, whereas उन छोटी छोटी चीजों का लाइफ के बड़े एम से कोई लेना देना ही नहीं है. सो प्लीज डोंट डू दैट. फोकस ओनली ऑन द वर्दी. नेक्स्ट वन, इसके बारे में आपने सुना है, इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग यू आर डिकेइंग. Like I've told you, my second core purpose is continuous improvement across all 4 dimensions. Right? Remember, चक्का तभी तक खड़ा रहता है, एक चक्का तभी तक खड़ा रहता है जब तक वो रोल होकर के आगे जा रहा है. जिस वक्त वो आगे चलना बंद हो जाएगा, रुक जाएगा चक्का, वो गिर जाएगा. आगे बढ़ता हुआ चक्का ही खड़ा रह सकता है, रुका हुआ चक्का खड़ा नहीं रह सकता. राइट? ऑलवेज रिमेन अ वर्क इन प्रोग्रेस. आप कहीं पर भी जाते हैं, जहां पे कहीं कुछ काम चल रहा होता है, वहां पर एक बोर्ड लगा होता है, वर्क इन प्रोग्रेस. राइट? वर्क इन प्रोग्रेस मतलब क्या है? समथिंग न्यू, डिफरेंट एंड बेटर इज हैपनिंग. कुछ नया हो रहा है, कुछ डिफरेंट, कुछ बेटर हो रहा है. राइट? सो ऑलवेज बी अ वर्क इन प्रोग्रेस इन ऑल 4 डिमेंशंस, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल. ठीक है? इफ यू आर नॉट अपग्रेडिंग, यू आर डिकेइंग. If a tree is not growing, basically it is dying. If water is not flowing, it is getting decayed. रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाता है.
I learned this principle from my mentor and my someone whom I consider my guru in public speaking, Mr. Santosh Nair. उनसे मैंने सीखा कि रुका हुआ आदमी और ठहरा हुआ पानी दोनों सड़ जाते हैं. So don't let this happen with your life, right? अपने आप को अपग्रेड करने के लिए to retrain your mind, right? Which three relevant skills will you work on in the next 1 year? वो ऐसे कौन से 3 हुनर है, ऐसे कौन से 3 कौशल हैं, ऐसे कौन से 3 स्किल्स हैं, राइट, जो अभी आपके पास नहीं है पर जो आपको डेवलप करना है. क्या आपको पब्लिक स्पीकिंग का स्किल डेवलप करना है? क्या आपको पावर पॉइंट के खूबसूरत स्लाइड्स बना करके उनको प्रेजेंट करने का स्किल सीखना है, राइट? क्या आपको अपने बॉडी को ट्रेन करने का स्किल सीखना है? इट कैन बी एनीथिंग. क्या आपको जो है टू बिकम अ बेटर एम्प्लॉयर, क्या आपको एम्प्लॉयज के साथ कम्युनिकेट कैसे करना, ये स्किल आपको सीखना है. अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड इज द वर्ड रेलिवेंट स्किल. द वर्ड रेलिवेंट मतलब वो स्किल्स जो आपको आपकी जिंदगी का जो बड़ा कोर पर्पस है, आपकी जीवन के उद्देश्य को सपोर्ट करे, उन स्किल्स की मैं बात कर रहा हूं. तो ऐसी कौन सी 3 स्किल्स आप डेवलप करेंगे, राइट? क्या आप ऑनलाइन किस तरीके से काम करना, पेपरलेस वर्क कैसे करना, क्या ये स्किल आपको डेवलप करना है? तो ये 3-4 स्किल्स जो आप डेवलप करना चाहते हैं अगले 1 साल में. या आप एक सीनियर व्यक्ति हैं और आपको स्मार्टफोन यूज करना नहीं आता. स्मार्टफोन यूज करना, इंटरनेट की स्किल्स यूज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इज दैट द स्किल विच यू वांट टू डेवलप, विच विल हेल्प यू अचीव योर ग्रेट एम इन लाइफ? तो उनके नाम यहाँ पर लिखिए. एंड एक जैसे यहाँ पे प्लान दिख रहा है, नाउ डोंट गो इनटू द डिटेल, दिस इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव इमेज. राइट द स्टेप्स एंड सब स्टेप्स ऑफ योर 1 ईयर प्लान. अपना 1 साल का प्लान बनाइए जिसमें आपको 4 स्किल्स डेवलप करेंगे. उसमें किन लोगों की मदद पड़ेगी, किन किताबों की मदद पड़ेगी, कौन से ट्रेनर्स की मदद पड़ेगी, और वो उन सब की मदद लेकर के आप अपने उस स्किल को कैसे बढ़ाएंगे, कौन सी किताबें पढ़नी पड़ेंगी. ऑल दैट यू हैव टू मेक अ 1 ईयर प्लान, राइट? अगले इस महीने से लेकर के आज जो भी तारीख है, राइट, और जो भी साल है, अगले साल की उस तारीख तक आप ये 4 स्किल्स डेवलप करने का प्लान आपका क्या है ये बना डालिए. नेक्स्ट वन, organize and execute around priorities. Now this is something very important. Leave everything aside or delegate. What are those 4 priorities? Now इसमें मैं और ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा. I've already talked about what is that one big priority of your life. और उस प्रायोरिटी के अराउंड सब कुछ आपको अरेंज करना है. Like everything I do, all my priorities, all my work, if I travel, I will travel for that big purpose of my life, which is to motivate humanity to achieve more. If I read a book, it is because that is my number 1 priority. ठीक है? In fact, this word priority is, I believe in itself, is a misnomer. Priorities कुछ नहीं होता है. प्राथमिकताएं कुछ नहीं होती. प्राथमिकता, priority can be only one. Rest are the other things which you need to do, right? And all those other things, either you leave them or delegate it to someone else, right? So organize and execute around top priorities. I've only added this word top, right? This sentence is actually originally attributed to Stephen Covey. Organize and execute around priorities. I learned this from Stephen Covey and this is what I am talking about. पर अगर आपको अपनी लाइफ की प्रायोरिटीज ही नहीं मालूम, तो anything is permissible. Then anything can consume your time. Anyone can contact you. Anyone can kill your time. Anything. So this is very important that you know the priorities of your life. Next one, your environment is more powerful than your willpower. आपका जो वातावरण है ना, वातावरण 2-3 तरह का होता है. एक तो लोगों का वातावरण, कैसे लोगों के बीच में आप रहते हैं. दूसरा, उन चीजों का वातावरण, कौन सी वस्तुएं
आपके आसपास है, और तीसरा हम्म, वो जो डिजिटल दुनिया जो आपके आसपास है, ये आपका वातावरण बनाती है। तो आपका वातावरण बनता है लोगों से, आपका वातावरण बनता है वस्तुओं से, और तीसरा आपका वातावरण बनता है वो इंफॉर्मेशन सोर्सेस, वो टीवी सीरियल्स, वो किताबें, वो वेबसाइट्स, वो वीडियोस जो आप देखते हैं। ये तीनों चीज़ें मिल करके आपका वातावरण बनाती हैं। और लेट मी टेल यू फ्रेंड्स दैट योर एनवायरनमेंट, ये जो वातावरण, आप जिस वातावरण में आप रहते हैं, इट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर, राइट। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम ऐसा वातावरण बनाएं जो हमारे अनुकूल हो, या अपने विल पावर को इतना स्ट्रांग कर लें कि वो किसी भी वातावरण से ऊपर उठ सके। जैसे कि कीचड़ में कमल खिलता है, ये एग्जाम्पल आपने कई बार सुना है, राइट। आइदर क्रिएट अ वंडरफुल एनवायरनमेंट which suits you and your big purpose, or develop a willpower which can overcome any negative environment। और मेरे ख्याल से तो आपको दोनों पे काम करना चाहिए। एंड the most important of these three types, people, objects and the information sources, is the people, right? People can really, elevate you, or they can really bring you down. Doesn't matter whether that particular person, or whether those people are related to you, whether those people are not related to you, वो आपके blood relatives हैं या नहीं है, या आपके भाई हैं या कोई रिश्तेदार है, जो भी हैं, पड़ोसी हैं, दोस्त हैं, doesn't matter. If the environment that they are giving you is not supporting your big aim in life, your priorities in life, just change that environment. Just be very practical and very, because you cannot allow someone to pull you down। मतलब वो तो आप खुद कुछ कर ही नहीं रहे हैं और आपको भी नीचे पुल डाउन कर रहे हैं। डोंट अलाउ दैट टू हैपन। बी वेरी केयरफुल ऑफ योर एनवायरनमेंट, ठीक है। और अगर आपका एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है तो आपको फिर ज्यादा विल पावर यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जब आप ऐसे लोगों के संपर्क में आते हैं जो आपके लिए सुटेबल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ब्रिंग पीपल अप टू योर लेवल। अपना एनवायरनमेंट खुद, हम अपना एनवायरनमेंट हर जगह लेकर के चलते हैं। वी ऑलवेज टेक आवर एनवायरनमेंट विद अस। सो जब हम लोगों से टकराते तो हम लोगों के लेवल तक ना उतरें, हम लोगों को अपने लेवल तक उठाएं, अपनी बुद्धिमत्ता के लेवल तक उठाएं, हम लोगों को अपने बौद्धिक स्तर तक उठाएं, हम लोगों को अपने भावनात्मक और आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लेवल तक हम लोगों को उठाएं, लोगों के लेवल तक हम नीचे ना गिरें। पर ये कौन कर सकता है? ये वही कर सकता है जिसका अपनी खुद के एनवायरनमेंट पे कंट्रोल हो, या इतना विल पावर हो कि किसी भी नेगेटिव एनवायरनमेंट को पॉजिटिव एनवायरनमेंट में चेंज कर सकता है, राइट। सो व्हाट यू नीड टू डू now, create your environments. Write down the list of kind of books that you will read. This, create a library, create a beautiful library of books, like shown here. Now this is an environment, उन महान लेखकों की लिखी हुई वो महान किताबें जो आपका एनवायरनमेंट बनेगी और उसका असर आप पे होगा। और ये तो हम खुद ही बना सकते हैं ना, राइट। काइंड ऑफ पीपल आई विल एंटरटेन, द पीपल अराउंड यू। कैसे लोगों को आप अपने आसपास रहने देंगे। मेरा कहने का मतलब नहीं है कि जो लोग आपको एलिवेट नहीं करते आप उनको भगा दो या आप उनसे दूरी, उनसे जस्ट इमोशनली कट ऑफ हो जाओ। उनकी कही हुई बातों का अपने ऊपर में असर मत होने दो। मैं नहीं कह रहा हूं कि परिवार छोड़ दो, या मैं नहीं कहता हूं कि सबसे दूरी बना लो इन द सेंस, स्टॉप letting people affect your internal system। I hope आपको ये चीजें समझ में आ रही। You choose your environment, नहीं तो उनसे साइलेंटली एक दूरी बना लीजिए और मेंटली इमोशनली ऐसे लोगों से कट ऑफ हो जाइए, राइट। एंड इट अप्लाइज टू योर कस्टमर्स ऑल्सो। कुछ ऐसे कस्टमर्स जो आपको हमेशा पुल डाउन करते हैं, कुछ ऐसे कस्टमर्स जो हमेशा आपकी क्वालिटी की कद्र नहीं करते, कुछ ऐसे कस्टमर्स जो हमेशा जिनको डिस्काउंट की पड़ी रहती है। इफ इट डजंट हेल्प योर एनवायरनमेंट, जस्ट बैनिश दोज कस्टमर्स, सर्व ओनली दोज कस्टमर्स who really appreciate your quality। And let me tell you, such customers are there, such dealers are there, such suppliers are there, right।
एंड द काइंड ऑफ ऑनलाइन कंटेंट आई विल यूज। यहाँ पे ऑनलाइन कंटेंट से मेरा जो है, लेट मी टाइप हियर, इंफॉर्मेशन systems I will use. Online content in information systems which I will use. Now social media is your online information system. Google is your online information system. The websites which you visit is your online system. ये जो ट्रेनिंग प्रोग्राम आप जो अभी देख रहे हैं, this is your online system. So कौन सा ऑनलाइन सिस्टम्स और इंफॉर्मेशन सोर्सेज को मैं अपना एनवायरनमेंट बनाऊंगा? प्लीज राइट डाउन हियर। राइट, आई होप यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ वैल्यू आउट ऑफ दिस कोर्स। कुछ चीजें आपकी सुनी हुई होंगी, बट लेट मी टेल यू डियर फ्रेंड्स, नोइंग डजंट मीन डूइंग इट। अगर आपको कुछ पता है, कुछ पॉइंट्स आपको लग सकते हैं हाँ ये तो मैंने पहले सुना था, दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट कि पहले आपने सुना था। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगर आपने सुना था तो आपने किया क्या उसको लेकर के। अगर आपने सुना था और उसका कुछ आपने किया नहीं, तो इसका मतलब उस इंफॉर्मेशन को आपने वेस्ट किया। डोंट लेट दैट हैपन विथ यू, राइट? नोइंग इज नॉट इनफ, knowing and then doing is something which is very important. Coming on to the next principle, good is the opposite of great. Yes, I am saying it. Good is the opposite of great. Be so great that they can't ignore you. Right? Now, good is the opposite of great. Be so good that they can't ignore you. Again, I am not sure of who originally said it, but जिसने भी कहा, hats off to this person. Good is the opposite of great. Great was taught to us by Jim Collins, right? Jim Collins ने हमको सिखाया था good is the opposite of great. And there is a book by this name, Good to Great, by Jim Collins. Do read that book, Good to Great. उनका ये कहना है, bad is not the opposite of great. Bad अगर कुछ है तो वो तो bad है. Good is the opposite of great. Good enough is the opposite of great. Because good enough है ना, you stop going towards great. अच्छी ठीक ठाक नौकरी है ना, you stop going towards a great fulfilling job which can turn around a company. ठीक ठाक खाने को मिल रहा है ना, तो you stop going towards a great lifestyle. ठीक ठाक करियर है ना, good enough, that is what stops you from going towards great. Bad in fact motivates you to elevate, but good enough may stop you from going towards great. So bad is not the opposite of great. Good or good enough, ठीक ठाक है, is the opposite of great. Good enough is the basis of mediocrity. It kills excellence. It stops you. If something stops you from becoming world class, it is good enough. I could have been a good enough speaker, good enough trainer, but that will never help me for getting a Guinness World Record, or becoming an international trainer, or running beautiful online courses. Good enough is the basis of mediocrity. So here my question is, which one big world problem will you solve or help to solve? Now I'm talking about a world level problem. ठीक है? Which one big world problem will you solve or help to solve? What one great thing that you will do at the world level? Now my purpose is related to youth empowerment, as I've told you a few times in this training program. ये यूथ को लेकर के जो समस्याएं, यूथ के माइंडसेट को लेकर के जो समस्याएं हैं, that is one big thing which I'm focusing on, right? And I want to be so good enough in that one day international governments, governments of the countries, international community will be looking for me. I just don't want to be a good enough trainer. I want to be a great trainer, a great speaker, a great communicator, जिसको इंटरनेशनल असाइनमेंट्स एक दिन मिलेंगे. आई वॉन्ट टू बी अ ग्रेट स्पीकर, जिससे मैं ये यूथ के माइंडसेट के प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं. द परस्यूट ऑफ ग्रेटनेस is something which we all must have, because God has created us great. Like
जब हम फल खरीदने के लिए जाते हैं, कोई फल इतना अच्छा होता है कि हम अपने आप उसको उठा लेते हैं, और कोई फल ऐसा रहता है हम देख करके जस्ट इग्नोर करते हैं, नॉट बैड, खराब है, नॉट गुड इनफ। व्हेन वी सिलेक्ट फ्रूट्स, don't we select the best fruits which are available? What are you trying to become? Are you trying to become the best fruit available so that people just pick you up, or you are trying just to be average? Because your returns in life will be dependent on how good, how great you try to make yourself through constant upgradation and other things. Remember, like I told you earlier, all these things are related to each other. If you are not upgrading, you are decaying. Now among these fruits, right, now few can be so good enough कि आप सीधा उसको उठा लेंगे. So again, the question is, who is your idol? Which great personality's example will you follow? My idol is APJ Abdul Kalam, like the image says, right? Now he worked for youth, he worked for making India a nuclear state. That one big world problem is solved, and I want to become like him. I want to become the APJ Abdul Kalam of youth empowerment, right? So not just good enough, becoming great, being so good that assignments come to me, that responsibilities come to me, that governments call me to work for them. One day I would like to work with the central government on an international mission. ये मेरी तमन्ना है, and I want to be really, really, really good for that, so that no one can ignore me, right? Okay, next. Money and body are great servants, but very poor masters. पैसे को अपना मालिक बना लिया ना, तो पैसा तुमसे हर तरह का गलत काम करवाएगा. If you use money, now let money be your servant. Money, why? Yes, I am earning good money and I want to earn great money. Why? So that I can serve better. Now money, the use of money is something which I will decide how to use the money. Money will not decide how to use me. I will decide how to use money. Money is a great servant. आप बहुत कुछ दुनिया का पा सकते हैं, आप बहुत अच्छी लग्जरी पा सकते हैं, बहुत अच्छी जिंदगी आप पा सकते हैं. If you have money, it's very important to earn good money, but don't make money your boss, because money as a boss is a terrible boss, but money as a servant is a wonderful. We all want servants, we all want strong and healthy and very good servants, right? So that our life becomes easy and so that we can contribute more. Money is like that, your body is like that. बॉडी को बॉस बना लिया ना, बॉडी की हर चीज सुनने लग गए, तो शरीर तो तुमको बर्बाद करके छोड़ेगा. शरीर तुमको बोलेगा अरे छोड़ ना, आज नहीं जाते वॉक के लिए, कल जो है कितना थक करके मैं आया था, एक दिन का रेस्ट तो. शरीर तो बोलेगा अरे खा ले, राइट? बट इट इज योर माइंड हु विल डिसाइड वो खाना कि नहीं खाना. इफ द माइंड इज स्ट्रांग, the body just simply obeys you into doing great things, right? If the mind is strong, कि खड़ा हो और बोल 60 घंटे के लिए, speak for 60 hours. If you have a strong body, body as a servant will stand up and speak for 60 hours. Do you think people who climb Mount Everest, they climb just on the basis of their body? Yes, they do have a strong body, but that strong body obeys the mind. Climb Mount Everest. Do anything to climb Mount Everest. It is the ये जो दिमाग की सल्तनत होती है, जो माइंड की सल्तनत होती है, जिसके अधीन शरीर होता है, होना चाहिए. क्यों? शरीर तो थक जाएगा, बोलेगा बस काफी चढ़ गया ना, हो गया ना, कौन देख रहा है. But it is the mind, a strong mind, which carries the body till the top of Mount Everest. So mind and body, money and body should obey your rules. Don't be a slave of your body. Don't be a slave of money. Become their master. Right? Have you read the novel Master of the Game? Sidney Sheldon's novel, Master of the Game? You must. आपको पढ़ना चाहिए मास्टर ऑफ द गेम नॉवेल, और आपको समझ में आ जाएगा what to master in life. Right? How will you utilize the money you will earn?
right? We have the great example of Azim Premji. Now he earns a lot of money, but what is the purpose behind the money? Now definitely money is his servant. Money has made him even a better person. For some people, money corrupts them. But people like Azim Premji, money makes them a better person. Money makes them a better philanthropist. Money makes them do great things. They make their money do great things. I'm sorry. They make their money do great things. Have you heard of Azim Premji Foundation? Have you heard of Azim Premji University? This is how they are the master of their money and utilize the money for great causes. How will you utilize the money you will earn? And for creating a great earning system, for creating a great body, I want you to write down 3 or 4 things which you will start doing to work on your body. कुछ चीजें आप जो करना शुरू करोगे एक शानदार शरीर के लिए, कुछ चीजें जो आप पहले भी कर रहे थे और उसको कंटिन्यू करते रहोगे, और कुछ चीजें जो आप कर रहे थे पर अब स्टॉप करेंगे वो करना. Right? So what things you will start doing to create a healthy, strong body? What things you will continue doing to create a great, strong body? And what things you will stop doing to develop it? Now this particular slide can be a game changer for you. Can be a game changer for you because it redefines your concept about money and your body. आपके शरीर और आपके माइंड को लेकर के आपकी जो अवधारणा है, आपका जो कंसेप्ट है, उसको रीडिफाइन करता है, उसको फिर से परिभाषित करता है. इसलिए वर्क वेरी डिलीजेंटली, वेरी हार्ड ऑन दिस पर्टिकुलर स्लाइड. Now all these great people, Bill Gates Foundation is doing such great work. Now why? Money didn't corrupt Bill Gates. Money made him a better person, a world changer. Let us become like that. Right? Next one. Take calculated risks. Major successes depend on your risk appetite. And when you take risks, sometimes you lose also. When you take risks, sometimes you get a failure also. You get a loss also. Sometimes there can be a little loss of reputation also. But all these things are very temporary if your intention is all right. अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं, फॉर मी coming into this particular profession and delegating my medical business was a great risk which I took. But I'm very happy that I took that risk because now I can change the lives of millions and millions of people. But if I didn't take that risk and had continued with my original profession of pathology, yes, it would have been good. It would have been good enough. But I wouldn't have been able to change the lives of so many people, right? You have to take risks. In my profession also, if we work on 10 collection centers, maybe 3 or 4 of them succeed. Around 6 of them do not succeed, right? But which 4 will work, I come to know only after I open those 10 centers. कौन से 4 centers चलेंगे ये मुझे तभी पता चलेगा जब मैं 10 centers खोलूंगा. और बाकी के तो वो 4 centers मुझे आगे लेकर के जाते हैं. और जो 6 सेंटर्स जो नहीं चले वो मेरे को सिखा करके जाते हैं. रिमेंबर, डू टेक रिस्क्स, डू टेक नोबल रिस्क्स. यू नेवर लूज इन लाइफ. आइदर यू विन और यू लर्न. आप कभी हारते नहीं हो. रिस्क लेकर के या तो आप जीतते हो या तो आप सीखते हो. राइट? इफ यू हैव दिस नो रिस्क एटीट्यूड, it will rot you to dirt, let me tell you. With the upcoming world systems, with the digital world coming in, if you do not take calculated risks, if you do not take noble risks, you will rot to dirt. Now maybe I'm using very harsh language here, but आप सड़ जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे अगर आप लाइफ में calculated risks नहीं लेते हैं तो. Remember that I am putting great stress on using words like calculated risks, noble risks, relevant risks. रिस्क लेने का मतलब ये नहीं कि जुआ खेलो. नो, रिस्क लेने का मतलब ओनली दोज रेलिवेंट रिस्क्स जो अगर सक्सेसफुल हो गई तो आपको आपके लाइफ का बड़ा पर्पस अचीव करने में मदद करेंगी. यस, टेक कैलकुलेटेड रिस्क्स. नॉट टेकिंग रिस्क इज द ग्रेटेस्ट रिस्क, राइट?
आई थिंक मार्क जकरबर्ग ने कहा था, आई एम बैड, आई एम, प्लीज पार्डन मी फॉर नॉट रिमेंबरिंग द सोर्सेज ऑफ दोज सम ऑफ द कोटेशंस व्हिच आई एम टेलिंग यू, बट अ नो रिस्क एटीट्यूड विल रॉट यू टू डर्ट। विच फियर्स विल यू डेयर टू फाइट? इसके लिए काम क्या करना? कौन सी चीजों में आपको रिस्क लेने में डर लगता है? आपको डर कहां लगता है? हम सबको पता है ना, डर के आगे जीत है। आपकी जिंदगी के डर क्या है? नए लोगों से मिलने में डर लगता है, राइट? डिजिटल सिस्टम्स अडॉप्ट करने में डर लगता है। अगर आप एक टीचर हैं, इफ यू आर ए टीचर, तो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज करके लाखों लोगों तक जाने का स्किल डेवलप करने में आपको डर लगता है। आपको जिस चीज का भी डर लगे, इफ यू आर ए स्टूडेंट, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से डर लगता है, जिस सब्जेक्ट से आपको डर लगता है, आपकी जीत उसी के पीछे छुपी हुई है। जो स्किल डेवलप करने से डर लगता है, आपकी जीत उसी के पीछे छुपी हुई है। जिस चीज से डरते हो, आपकी जीवन की प्रगति उसी के पीछे छुपी हुई रहती है। आई वॉन्ट यू टू आंसर दीज टू क्वेश्चंस। कौन से डर हैं जिन पे आपको जीत हासिल करनी है? एंड विच डेयरिंग डिसीजंस यू नीड टू टेक बट आर वरीड अबाउट व्हाट विल हैपन? कौन सा रिस्की डिसीजन, कौन सा एक डेयरिंग डिसीजन लेने में आपको डर लग रहा है? मुझे पता है कि आपको पता है कि कुछ डेयरिंग डिसीजन आपको अपने लाइफ में अभी लेने पड़ेंगे। वो कौन से डिसीजंस है जो आपको पता है कि आपको लेना है, ठीक है, जो आप लेने में डर रहे हैं क्योंकि आपको लग रहा है यार लोग क्या कहेंगे, पता नहीं क्या होगा, अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ तो। हो सकता है आपको अपना शहर चेंज करके जाने की बहुत आवश्यकता है। हो सकता है जिस प्रोफेशन में आप अभी हैं उस प्रोफेशन को चेंज कर देने की आवश्यकता है। हो सकता है जिस कंपनी में आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को छोड़ देने की आवश्यकता है। हो सकता है जिस घर में आप रह रहे हैं, जिस लोकेलिटी में आप रह रहे हैं, जिस वातावरण में आप रह रहे हैं, उस वातावरण को छोड़ करके किसी और अच्छे पॉजिटिव वातावरण में जाने की आवश्यकता है। बट यू आर वरीड कि यार कैसे जाऊं, कैसे ये करूं। ऑल ऑफ अस नीड टू चेंज समथिंग इन आवर एनवायरमेंट एंड देयर इज अ रिस्क इन्वॉल्व। बट लेट मी टेल यू अगेन, आई एम टेलिंग दिस इज particular this, a no risk attitude will rot you to dirt. आप सड़ जाएंगे, बिछड़ जाएंगे, पिछड़ जाएंगे। सो आंसर दीज क्वेश्चंस एंड यू विल गेट अ लाइफ पाथ। आपको आगे जाने का एक रास्ता मिलेगा। रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? सेट योर हैप्पीनेस इंडेक्स ऑन गोल्स एंड गिविंग। क्या मतलब इसका? व्हाट इज द मीनिंग? हैप्पीनेस इंडेक्स, व्हाट मेक्स यू हैप्पी? हैप्पीनेस इंडेक्स मीन्स कौन सी चीज आपको कितना खुश करती है। कोई चीज आपको लेवल 3 तक खुश करती है, कोई चीज या कोई डिसीजन या कोई पर्टिकुलर चॉइस आपको लेवल 8 तक खुशी देती है, और कोई ऐसी चीज होती है जो आपको लेवल 10 तक खुशी देती है। ऑलवेज रिमेंबर, इट्स अ ह्यूमन टेंडेंसी। और ये बड़े बड़े लोगों ने, महापुरुषों ने हमको सिखाया है, द मोर यू गिव द मोर हैप्पीनेस यू गेट। life ka success depends on how much you are able to give, how much you are able to contribute. So set your happiness index on contribution, how much you are able to give, and as a consequence of that you will you will be able to get a lot of money, recognition, fame, everything. So आपके लाइफ के गोल्स क्या है? ऑब्वियसली आपके लाइफ का गोल कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे बहुत सारे लोगों का भला होगा। वर्क ऑन दैट गोल, वर्क ऑन हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट मोर, हाउ यू कैन कंट्रीब्यूट बेस्ट, हाउ यू कैन डू बेटर, हाउ यू कैन चेंज लाइव्स, एंड सी हाउ मच ऑफ हैप्पीनेस यू गेट। गिफ्ट लेने में भी खुशी मिलती है, बट गिफ्ट देने में, जब हम कोई गिफ्ट देते हैं, कोई प्रेजेंट देते हैं और वो सामने वाले के काम का होता है और सामने वाला उसको देख करके खुश हो जाता है, उसकी खुशी में हमारी खुशी शामिल होती है। Isn't it? When you help someone and that person thanks you, वो जो खुशी का एहसास होता है, right? When you donate blood को डोनेट करने के बाद, now why I remember this example is because I am also associated with a blood bank. When you donate blood, अच्छा लगता है, isn't it? Do you remember that advertisement? करके देखो, अच्छा लगता है। So focus on goals, achieving your goals, which will help a lot of people, and giving. ठीक है, गिवर्स गेन।
नाउ इफ यू आर अ BNI मेंबर, वहां पे यही सिखाया जाता है, गिवर्स गेन। जो जितना कॉन्टैक्ट्स और बिजनेस देगा वो उतना ही गेन करेगा। स्ट्राइव टू कंट्रीब्यूट, not to please people. Remember, you cannot please everybody. So strive to contribute. Strive not to, make certain people happy or to please certain people. Strive not for, कि इसके रिटर्न में मुझे क्या पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा. You just contribute, the money will come to you. What goes around comes around. So this is something very, very important mindset that you need to develop. Right? So set your happiness index number 10 on goals, achieving your goals, and in giving, contributing, teaching, helping, the money will flow back to you in abundance. And all the gains are not only monetary. There are certain gains in the spiritual realm. There are certain gains which are in the emotional realm. There are certain gains which are in the mental realm, the physical realm. So if you follow this principle, and now इसके लिए अब हमको क्या करना होगा, right? On a scale of 1 to 10, how committed are you towards your 2-year goals? ये जो हमने 1 साल या 2 साल के goals बनाए थे ना, skills को develop करने के लिए, ये करने के लिए, just write down how committed you are on a scale of 1 to 10. Remember, if you are committed at a level 10, the happiness index will be at a level 10. If you are committed at level 3, your happiness index will be at level 3. ठीक है? और जैसे मैंने कहा था, contribute करना, with charity, contribution of time or effort, can you start this very week? इसी हफ्ते से आप कौन सा एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर सकते हो, या कुछ दान कर सकते हो, कुछ अपना एफर्ट्स या टाइम या पैसा, अगर संभव हो तो पैसा भी, राइट? If you give time and if you give efforts, it is more valuable than just giving money. Donating money is very easy, but it is, giving your time and your efforts to a worthy cause is something which will really elevate your mind, body, heart and spirit to a great level. This is a mindset which I want you to work on. So answer these questions and then come on to the next principle, which is the 14th and the last principle, the mindset of how can I have both. Right? कई बार हमको लगता है यार पैसा कमाऊंगा, rich people, either you can be rich or you can be good, or good people are not rich. Let me tell you, it is possible to be a good person also and at the same time a rich person also. कि यार या तो बिजनेस में नाम कमाऊंगा या फैमिली की तरफ ध्यान दूंगा. नो, यू कैन हैव बोथ. You can be a great businessman. At the same time, you can do a lot for your family. It is just a matter of having your priorities right. Yeah, I can either enjoy good food or enjoy good health. या अगर मुझे healthy रहना है तो यार मुझे खाने पे cut down करना पड़ेगा. No. Develop a mindset of having both. How can I enjoy my food also and at the same time enjoy great health also? Right? It's not necessary कि healthy रहना है तो आपको food पे compromise करना ही पड़ेगा, taste पे compromise करना पड़ेगा. No, it's not like that. Either I can follow my hobby or I can follow my profession. You can do both. Select one particular thing in which you want to become great. एंड एट द सेम टाइम आपकी जो दूसरी प्रायोरिटीज हैं, अगर आपकी लाइफ में 2 या 3 चीजें हैं, इट इज पॉसिबल टू हैव बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स. यू नीड नॉट इग्नोर योर फैमिली टू बिकम अ ग्रेट बिजनेसमैन. यस, achieving that goal in your business is your top priority, I understand, but that doesn't mean that you have to ignore your family. You can devise your life in such a way. Some people have this thing that either I can enjoy my life or do great in business. No, you can do great in business, at the same time enjoy your vacations, enjoy your free time, enjoy your family time, enjoy your self upgradation time, and at the same time become a great businessman also. It is not that especially for women, it's very important कि या तो एक अच्छी गृहिणी बन जाऊं, अच्छी माँ बन जाऊं, या फिर एक अच्छा
अच्छा जॉब होल्डर बनूं या बिजनेस. नो, इट इज पॉसिबल टू डू बोथ, एंड वी हैव सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ पीपल हु आर डूइंग ग्रेट इन बोथ द वर्ल्ड्स, राइट. सो यहाँ पे प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज्ड. यू कैन हैव द बेस्ट ऑफ दोनों दुनियाओं का बेस्ट आपको मिल सकता है. जस्ट focus on a few, 2 or 3 priorities of life. So 3 priorities, 1 big aim, and the whole life will be absolutely great for you, right? So this is what I want, I'll expect you to do. ये ardhanarishwar in our Hindu mythology, Shiv and Shakti, like Shiv and Parvati. Now Parvati is representative of power, Shakti, and Shiv is the creator, is the god, is the epitome of nobility, right? So या तो either you can be noble or you can be powerful. Again, no. Like Shiv, Ardhanarishwar Roop is a combination of both masculinity and femininity. Like I am a male, but I can have certain feminine characters which are good for me, right? So Ardhanarishwar is that, having the best of both the worlds. So it is in our Hindu mythology also, that on one side you can have the attitude of a Shiv, and on one side you can have the attitude of power. जरूरी नहीं है कि आप एक पावरफुल व्यक्ति जो है, अगर आप बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत भले व्यक्ति हैं, तो आप पावरफुल नहीं हो सकते. नो. I just gave you the example of Azim Premji, right? A very thorough gentleman. We all know Ratan Tata, a thorough gentleman, a very nice person, but at the same time very powerful, very rich also. It is possible. This is what the Ardhanarishwar Roop, or Shiv and Shakti, it teaches us. How will you balance your time and efforts between career and self gratification to enjoy life also, and at the same time achieve that one great thing in life? How will you have this balance? How will you manage your time and manage your efforts accordingly, is I want you to think about. Now there are many training programs which I conduct to help you answer this, but यहाँ पर मैं आप चाहूँगा कि पहले अपना आप एक माइंड का कंसेप्ट बनाएं, आप अपने माइंड को ट्रेन करें कि दिस इज व्हाट आई वांट टू अचीव, एंड देन आई विल हेल्प यू टू डू दो स्पेसिफिक थिंग्स विच आर रेलिवेंट फॉर योर लाइफ. आपको अपने लाइफ में क्या करना है उसके लिए हम कभी फिर बैठ करके बात कर सकते हैं, राइट? सो दिस इज द प्रिंसिपल दैट आई वांटेड टू टॉक यू अबाउट. सो मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था. वी कम बैक टू द क्वेश्चन, व्हाट do you want to gain out of this course, right? Which are the takeaway points for you? Now remember that takeaway points will be different for everyone. किसी को कोई पॉइंट अच्छा लगा होगा, किसी को कोई पॉइंट अपने लाइफ के साथ बहुत रेजोनेट किया होगा. सो यहाँ पर मैं इस सवाल को बदल देता हूँ और यहाँ पे मैं कहता हूँ, what did you gain out of this course? What you wanted to gain versus what you gained, what did you gain out of this course? और ये सब जो आपने सीखा इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में, how will you elevate your life into a masterpiece? Each of us have come here to make our life a masterpiece. Like if you read this particular book of mine, if you read this book of mine, God proposes, man disposes, right? If you see the back of this book states that God has sent us to this universe to achieve a specific great purpose of life. वो लाइफ का ग्रेट पर्पस क्या है उसको पहचानना है और उसको अचीव करने के लिए जी जान से लग जाना है, राइट? सो एक मास्टरपीस, ईच ऑफ अस हैज कम हियर टू क्रिएट अ लाइफ which is a masterpiece. So I've highlighted it and I've underlined it, and let me change the color also so that it becomes very very clear to you, and let me really highlight it. How will you elevate your life into a masterpiece? This program, this mindset which you have developed will really help you. Now how am I trying to create a masterpiece of my life? It is through this Ajeya Bharat Prakalp, right? Where I teach people that degree is not equal to job or growth, that skill is equal to job or growth, that mindset is equal to job or growth. And this is our slogan,
इस महीने क्या नया सीखा? What new did you learn this month? No, I'll also tell you always as to what I'm doing. I'll never say anything which I am myself not doing. I am learning online training systems. I am learning how to develop a business, how to develop a beautiful training courses online, which person sitting anywhere in the world can attend these courses. I am learning these new skills, how to develop online payment systems, online webinar systems, online going live training programs, and all these things I am learning. इस महीने मैं ये नया सीख रहा हूँ. And you can visit ajayshesh.in to to know a lot of more resources which are available to you, and help me organize these Mindex advanced programs. Like ये तो एक ऑनलाइन प्रोग्राम है, ऑफलाइन प्रोग्राम भी हम करते हैं. आई रिक्वेस्ट यू टू ज्वाइन अजेय भारत प्रकल्प, एंड एक जो नीचे एक लिंक आपको मिलेगी, उस लिंक को क्लिक करके आप अजेय भारत प्रकल्प पर ज्वाइन कीजिए, एंड एंड हेल्प मी इन organizing live seminars in a college near you. Help me organize a live training program in a college near you. Online products तो मेरे हैं ही. Ajay Bharat Prakalp are free of cost seminars. The Mindex seminars are always free of cost, और जो हम colleges के लिए करते हैं. And out of those students, now if 200 students are sitting there, there will be 20 or 25 of them who really want to continue working further with me. कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं, 100-200 में से 20-25 ऐसे होते हैं जो आगे भी एडवांस्ड प्रोग्राम्स मेरे साथ जो है वो करना चाहते हैं. उनके लिए वी हैव दिस Mindex advanced series of programs. This Mindex advanced series of programs, जिनमें से उन गिने चुने विद्यार्थियों के साथ में काम करता हूँ, उन गिने चुने यूथ के साथ में काम करता हूँ, और उनको आगे चल करके पर्सनल लीडरशिप और पब्लिक लीडरशिप के लिए तैयार करता हूँ, so that a great nation can be created. So this is my vision. This is one big thing which I am trying to develop. So, ladies and gentlemen, and young boys and girls, and all those people, thank you so much. Thank you so much for paying attention this far, for attending this online training program. And there are a lot more resources which I'll be coming up with. And always remember, एक चीज हमेशा याद रखना है, एक दिन में नहीं होगा, लेकिन एक दिन जरूर होगा. Now this is the 15th bonus mindset principle which I am giving it to you. एक दिन में नहीं होगा, but एक दिन जरूर होगा. It will not happen in a day, but it will happen one day. Thank you very much. Please help me in progressing this Ajay Bharat Prakalp, in spreading the cause of Ajay Bharat Prakalp in an institution near you. All the best. Thank you once again, and see you in other training programs. Bye bye.